We'll wait for a minute or so, guys, and then we'll start. Meanwhile, did you guys check asynchronous and synchronous, the storage topic, which I asked you guys to check yesterday? Anyone? This one, Yes, I synchronous. did. Yeah. Could you tell the group what did you find and could you explain it? Mhm. No one is going to ask you this in Sh- interview. This is mhm. just for your knowledge, though. Sure. So synchronous copy to data means we will receive the acknowledgement instantly without any delay. However, on the other hand, asynchronous, we will receive the response once it is available. That's the difference between synchronous data and asynchronous data. Okay, I hope others have checked. If you guys did not understand, go ahead and check it, please, once. Though as I told you, no one is going to ask you this in interview के synchronous क्या होता है, asynchronous क्या होगा. इस level का question तो definitely कोई नहीं पूछ रहा है, but it's good to know. When you are explaining, if they ask you what is the difference, that time you can say that these are the difference, and that time if you say, तब कभी कभार question आ सकता है कि okay, you are saying synchronous asynchronous, what does it mean? तब आ सकता है, other than that कोई नहीं पूछेगा. Okay. Sohail, one more thing. Under LRS, ये जो last point is superior to dual. What is the meaning of this? Superior to dual parity RAID. Now RAID is a huge concept. उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा RAID concept बनना पड़ेगा. We'll cover that. एक RAID वाला concept है. It's redundant array of independent disk. What happens here? कि आपका OS लेवल पे भी आप लोगों को redundancy चाहिए. ठीक है. Storage का तो ऐसा होता है ना, that storage वाले disk जो है, अगर उसका बैकअप होता है, अगर वो एक डिस्क डाउन भी हो जाती है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डाउन नहीं हो रहा है. बट आपका जो ओएस डिस्क होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क, अगर उस डिस्क में छोटा सा भी कुछ ये हो गया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही शट डाउन हो जाएगा. मतलब आपका कंप्यूटर ही पूरा, आपका सर्वर पूरा शट डाउन हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा. सो टू अवॉइड दैट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेड. रेड में क्या होता है, आप दो फिजिकल डिस्क को मिलाते हो बट वर्चुअली वो एक जैसे ही काम करते हैं. लेट मी ओपन पेंट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. So if I explain the RAID concept to you, then you will understand कि ये क्या है. What does it say here? That it is uh, good for RAID and dual parity. So if I explain RAID to you, then you will understand this point. So how does it work in RAID? Let's say that you have two hard disks, be it physical or anything. Physical में ज़्यादा RAID काम में आता है. So let's say that you have two hard disks. This one and this one. So normally what happens, that your operating system is on one, it is only on one hard disk. Okay, so how it works, if it is on one hard disk, read and write operation, everything, and if it is fails, whatever happens, all dependencies there on the one hard disk. In RAID, how it works, there are plenty types of RAID. Mirroring है, मेजर कोई इसके 5 रेट के टॉपिक्स है. शेयर एन इमेज विथ यू गाइस. वो अज्योर का टॉपिक नहीं है, कोई ज्यादा नहीं पूछेगा. गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, गो थ्रू दैट वंस. एंड यहाँ पे मैं एक दो एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो रेड वन इज मिररिंग. नाउ व्हाट इज मिररिंग? रेड मिररिंग क्या होता है, दैट व्हाटएवर यू राइट हियर इन दिस डिस्क, बी इट योर ऑपरेटिंग सिस्टम या उस पे कुछ भी है, वो एग्जैक्टली यहाँ पर कॉपी होता है. जो भी आप यहाँ पर कर रहे हो वो इस डिस्क पे कॉपी हो रहा है. जो भी आप यहाँ पर कर रहे हो, कोई डिलीट कर रहे हो, यहाँ से डिलीट हो जाएगा. आप कुछ लिख रहे हो, यहाँ पर ये होगा. सो दिस इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका, हेंस इट इज कॉल्ड मिररिंग. तो मिरर में क्या होता है कि आपका एक डिस्क अगर ये वेस्ट भी हो जाए ना, डिस्क किसी रीजन से, लेट्स से डिस्क क्यों खराब होते हैं, मे बी कोई उसका हेड, डिस्क के अंदर जो है हेड होता है, हेड खराब हो गया, या किसी तरह से वो जो स्पिन करता है डिस्क वो खराब हो गया, मे बी लाइफ के बहुत ज्यादा उसका डिस्क का लाइफ हो गया, वेर एंड टेयर उसकी वजह से खराब हो गया, कोई स्पार्क हो गया, किसी भी रीजन से डिस्क आपका खराब हो गया, स्टिल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटैक्ट होगा इस डिस्क पे. एंड यू विल गेट योर सर्विसेज हियर एंड योर ऑपरेटिंग सिस्टम वोंट गो डाउन. आपकी एक डिस्क चली गई और एक डिस्क यहाँ पर होगी और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, आपका कंप्यूटर ट्रांसपेरेंट वे में चलता रहेगा, वोंट इवन कम टू नो. एंड देन यू विल हैव एन ऑप्शन यहाँ पर कि आप इस डिस्क को रनिंग कंप्यूटर में चेंज कर सकते हो.
So that is what a RAID is. RAID का concept बहुत कम इसमें मैंने समझा है because that is not our topic. So this one, what does it say here? That this is uh, a dual parity RAID. ये जो the one which I explained, this is what a dual parity RAID is. So it is a good LRS option is good when it comes to RAID, but you will not be explaining this, and no one is going to ask this to you. Uh, be very assured about it. इतने सारे इंटरव्यूज जितने हम लोगों ने फेस किए, no one has asked this, but it's good to know information है. And remaining rate वाला जो है, let me show it to you. And कोई एक अच्छा सा article, I'll share it with you guys also. As of now, I'll just show it to you कि rate होता क्या है. Here it is. So we have a RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10. RAID 10 is nothing, RAID 1 और 0 का combination है. So how it works, ये सब कैसे है? If you guys want, you can watch a video. If you want me to cover it, we can do that. But बिल्कुल ही हमारे टॉपिक से कुछ भी इसका रेलेवेंस नहीं है. It's a good to know information. अच्छी टेक्नोलॉजी है, काफी डेटा सेंटर में बहुत हद तक यूज होती है ये. It is for the redundancy. But when it comes to cloud, क्लाउड ने अपनी ही redundancy दे रखी है. Hence we are not configuring RAIDs. इसलिए हम उसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. Still, if you guys want to do it, let me know. थोड़ा बहुत आप पढ़ लो, and if you think कि नहीं interested topic है, पता होना चाहिए, just text me in group, and if majority of people want, I can cover that. बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं, एक सेशन में कवर हो जाएगा रेट टॉपिक. बट इट इज टिपिकली, और डेटा सेंटर जो है ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर है, वहां पर काम आता है जब आप एक फिजिकल सर्वर बना रहे हो. वर्चुअल सर्वर में क्यों नहीं काम में आता है? लेट मी टेल यू. वर्चुअल सर्वर में हाउ इट वर्क्स, I hope all of you remember this. See, this is my, let's say, this is my hard disk, okay? And if I'm creating a virtual machine, if I'm creating a virtual machine, इस virtual machine, ये मेरा total एक suppose 1000 GB का hard disk है. दो वो टीवीज में होता है, तो एक टीवी से भी ज्यादा के होते हैं काफी. It's stuck, guys. Give me a minute. Let me see. Let's say कि ये 1000 GB का हार्ड डिस्क है, and then I'm creating a virtual machine here. तो इस वर्चुअल मशीन में अगर मैं रेट बनाता भी हूँ, so what will I do? 100 GB के दो डिस्क मैं इस पे लगाऊंगा. It is not responding paint application, so I'm waiting for that to come up. For some reason, I guess my computer is slow today. So let's say that this is your hard disk. Actual hard disk जो है आपका, okay. So this is for 1000 GB. Excuse me for this, guys. Okay, this is for 1000 GB, and here I'm creating my virtual machine. What I'm trying to explain here, that RAID हम virtual machine पे क्यों use नहीं करते हैं ज्यादा? Why is it only for physical machines? So here, out of these 1000 GB, I'm taking only 100 GB for my computer, for my virtual machine. ठीक है, यहाँ पर मैंने एक 100 GB की डिस्क ले ली जिसमें मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह ये करने वाला हूँ. ठीक है, but this 100 GB, where is it coming from? This 100 GB, it is coming from here. इस 1000 GB में से ही जो है यहाँ पर ये 100 GB आ रहा है. एंड नाउ आई से कि यार मुझ पे को इस पर redundancy चाहिए, एंड आई वांट वन मोर मिररिंग डिस्क, यहाँ पर एक और चाहिए मुझको. सो आई कैन हैव वन मोर 100 GB का डिस्क. ठीक है, आई कैन हैव दैट, टेक्निकली इट इज पॉसिबल. और ये आपस में सिंक करते होंगे. ठीक है, जो डेटा इस पे आ रहा है वो इस पे होगा, ये भी इस पे होगा. बट वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? अगेन, दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दिस डिस्क. तो अब ये तो एक्चुअल में वर्चुअल डिस्क है, ये तो कोई फेल होने वाली चीज है नहीं, राइट? दिस इज नॉट गोइंग टू फेल. सो जो डिस्क फेल होने वाली भी चीज है, दिस इज द डिस्क विच विल बी फेलिंग. और अगर ये फेल हो गया तो ये दोनों का वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है. आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? Yes. It's just give me a minute. Let me check that paint. What happened to that?
Okay, so is it clear, guys? Is it clear to everyone that those both these disks are coming from this physical disk? So even if we configure a RAID here, it is not going to help us if this disk fails. Is it clear? Yes. Okay. So this is how a RAID works. इसमें दो तीन और होते हैं, maybe RAID 5 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 होंगे. Then how it works exactly, वो सब कैसे होता है, वो RAID का एक बड़ा concept है. So if you guys want, we'll cover that some other day. Today we'll proceed with our storage वाला topic. Maybe you can watch a video or I'll share a video with you guys. एक video share कर देता हूँ. If you find it interesting, we can cover that. But Azure वाले interview में आपसे कभी नहीं पूछने वाले, don't worry. So that is what it is saying, that it is good for RAID. When it comes to RAID, we can go for LRS. Anyone else has any doubt? Did you guys understand what is this RPO? I was expecting someone will ask. What is RPO? Did you guys look for it or anyone? Is it same like synchronize, asynchronous, where a response will be? No, it's RPO. It's something different. There are two concepts Okay. in storage. One is RTO, recovery time objective, and then RPO, recovery point objective. But we'll do that when we cover. वैसे भी मैं इसको cover नहीं करने वाला था, but I was just expecting कि कोई इसको question पूछ लेगा. This we will cover when we do our backup वाला, जब हम section करेंगे हम लोगों का, वहां पर we have RPO and RTO. If you guys want, you can read it from here. इसमें होगा already RPO and RTO. But still we are not covering that. Here it is, minimum RTO. So वो exactly है क्या RTO and RPO? Here it is. It's a recovery point objective, age of data which can be recovered, and recovery time objective, time to recover. But we'll discuss this जब हम backup वाला section पढ़ेंगे, तब उसको हम detail में discuss करेंगे. Anyone else, any other doubts? Yes guys, anyone? Or should we proceed to portal now? If you guys do not have any questions, we can proceed with portal. Okay. So guys, I can see not much of the balance have been used. Not many virtual machines. I don't see many of them. So please start practicing. Go to portal. Though there were few I have checked in last week also when we took a break. I saw few virtual machines, few other resources. So good few people are practicing, but I'm requesting all of you to practice. Unless you practice, you will not understand. Here I have got one more subscription. If you guys want, I can give you access on this one also. If you have any practical which you want to do on 2 subscription, could anyone quickly give me a name of a practical where we will require 2 subscriptions? We have done this in past. A practical of Azure where we will require 2 subscriptions. Right, VNet or VPN, site to site, correct? Yes. So if you guys want, you can get access on that one also. I'll give it to you and we'll do that. So now let's talk about storage. I'll see if I have any specific resource group for storage. If not, I'll create one. Because it is very difficult to delete storage account. थोड़ा सा भी आप लोगों ने कुछ गलत कर दिया तो storage account delete करने में ही अपने आप में काफी एक task होता है. Okay, so there is no storage. I can say it's good that वहां पर कोई storage account नहीं है. I'll create a practice resource group. So
again from the beginning. If I have to create a resource, there are plenty of options. I can do it. I can go here. यहाँ से कर सकता हूँ. I can create a resource. यहाँ से कर सकता हूँ. I can search for that resource. यहाँ से कर सकता हूँ. I can go to that particular resource group जिसमें मुझको बनाना है. वहां पर जाकर I can click on create. मैं यहाँ से कर सकता हूँ. There are many ways, right? माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमेशा ये होगा कि एक चीज करने के कई सारे आपके पास ये होंगे. सो इफ यू क्रिएट हियर यू विल हैव टू सेलेक्ट स्टोरेज, और आप स्टोरेज वहां से बना सकते हो. यू कैन क्लिक स्टोरेज. यहाँ से भी आप बना सकते हो. सो लेट्स क्रिएट अ न्यू स्टोरेज अकाउंट. What options do we get in storage account? एक storage account के अंदर storage के कौन कौन से types मिलते हैं हमको? Who can tell me? Not exactly blob वाला question नहीं है. What are the categories do I get? Let me okay guys, remember these things. स्टोरेज अकाउंट टाइप जब आ रहा है तो जनरल पर्पस V1 V2 ब्लॉब स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, ये आप लोगों को आना चाहिए. सपोर्टेड सर्विसेज कौन कौन सी है? फाइल, क्यू, टेबल, डेस्क. सो रिमेंबर दिस. ये हेडिंग्स को थोड़ा सा याद रखो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें. नहीं, हॉट एंड कूल आर्काइव, दोज आर डिफरेंट थिंग्स. सर, those are not types. When I say type में आपका ये है जनरल पर्पस V1 V2 ब्लॉक स्टोरेज, फाइल स्टोरेज. ये आपके स्टोरेज के अकाउंट के टाइप्स हैं. सपोर्टेड सर्विसेज कौन सी है? ब्लॉब, फाइल, क्यू, टेबल. एंड देन रिडेंडेंसी तो हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया. अब किसके साथ कौन सी रिडेंडेंसी मिल रही है इतना डिटेल में भी याद करने की जरूरत नहीं है. आप लोगों को इतना भी कोई ग्रिल नहीं करेगा. एंड थोड़ा बहुत इसको पढ़ लो. मतलब मोस्टली जनरल पर्पस V2 जो है काफी फेमस है, बहुत ज्यादा यूज होता है. V1 कॉस्टली भी है, ज्यादा फीचर्स भी नहीं है, बट इट इज स्टिल देयर फॉर लेगेसी एप्लीकेशंस. ये काफी लेगेसी डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है, तो उनके लिए वो है वहां पर. बट मोस्टली वी यूज V2. इंटरव्यू में भी आप बोल सकते हो कि आई हैव बीन यूजिंग V2. जब से भी हम काम कर रहे हैं तब से आई हैव बीन यूजिंग V2. और V2 में क्या क्या सपोर्ट करता है? तो ऑलमोस्ट सारे सपोर्ट करते हैं. इसमें याद रखने की आपको कोई खास जरूरत नहीं है. इफ यू सी, इसमें ब्लॉब है, फाइल है, क्यू, टेबल, डेस्क एंड डेटा लेक जनरेशन 2 सब कुछ है. इन सब में से सेग्रीगेट होके कुछ चीजें यहाँ पर है, राइट? और रेडंडेंसी में भी इफ यू सी, इट हैज LRS, इट हैज GRS, RAGRS, ZRS, GZRS, RAGZRS, सब कुछ है इसमें भी. तो इसी एक को याद कर लो आप. दैट शुड बी इनफ फॉर यू. इन पूरे टेबल को याद करने की जरूरत नहीं होगी. क्लियर? ओके, सो माय क्वेश्चन इज हियर, सर्विसेज बता दो कि इसमें कौन कौन से ये मिलेगी मुझको, लाइक. और स्टोरेज में कौन कौन सी सर्विसेज हमने पढ़ी विद इन स्टोरेज. स्टोरेज के अंदर जाके हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, किस टाइप्स के स्टोरेज मिलेंगे. लेमैन में पूछ रहा हूँ मैं, फॉरगेट उसको याद मत करो. किस टाइप के स्टोरेज मिलेंगे मुझको, जो एक 4 टाइप्स हमने पढ़े थे. File, table, queue, blob. Right, and which one we will be reading? क्यों हम नहीं पढ़ेंगे ज्यादा. टेबल को बहुत कम पढ़ेंगे. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम विल बी फोकसिंग ऑन ब्लॉब एंड फाइल. फाइल शेयर भी एक ही उसका काम है, छोटा सा. सो लेट्स गिव सम नेम हियर. This has to be in lowercase and this has to be unique name. I cannot give any name which is being used already. And it's not only in your account, globally. ठीक है, गूगल मेरे अकाउंट में कहीं पर भी नहीं है, but still I cannot use it. स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम हम लोगों ने देखा कि कुछ चीजें स्टैंडर्ड में है, कुछ चीजें प्रीमियम में नहीं है. वी आर गोइंग विथ स्टैंडर्ड एज ऑफ नाउ. ओके, हियर इट इज जो हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे. LRS. Now all of you know what is LRS, right? I don't have to explain it again. And it still gives an explanation छोटा सा कि it is lowest cost option with basic protection against server rack and drive failures. It is recommended for non-critical scenarios. अपने आप में यहाँ पर काफी बोलता है, मतलब ये चीज आप इंटरव्यू में बोल दोगे तो उस इंटरव्यूअर को समझ में आ जाएगा कि आपका अप्रोच ठीक है. सेम चीज आप अगर वहां रिपीट करोगे. देन GRS, it is an intermediate option with failover capabilities in secondary region. ठीक है, इसका क्या मतलब है यहाँ पर कि रीजन लेवल पे भी जो है ये आपका रेडंडेंसी आपको देगा. देन
ZRS we have already read. ZRS is zone redundant storage, मतलब कोई ऐसा रीजन जिसमें मल्टीपल जोन्स है, वहां पर आपको जोन रिडंडेंसी देगा. GZRS हम लोगों ने ये ऑलरेडी देखा है. Now tell me one thing guys, looking at the screen, from where should I get this option? मुझको बाकी सब तो दिख गए. Where is my RAGRS and where is my RAGZRS? There is a checkbox below. Right. So anything जहां पर भी read वाला option available है, see the moment you select LRS वो checkbox चला गया. Why? Because LRS में there is no option. Read only वाला, read access वाला option ही नहीं है. And whenever we have that option, wherever we have that option, वहां पर ये आ जाएगा. So if I want to go ahead with GRS, this is the GRS one. So I will select GRS and I'll keep this unchecked. And if I have to select RAGRS, जहां पर मैं चाहता हूँ कि ये भी हो और मेरा secondary data जो है वो इसमें हो, readable इसमें हो. So I'll check this box. Clear? Yes guys, clear to everyone? Anyone has any Yes. doubt? Okay. Next. Now advanced option. I think we have already discussed this, but I'm again going ahead with this. So थोड़ा सा एक recap भी हो जाएगा and then we'll एक practice भी हो जाएगी इसकी. So I've already explained this. What is it? It is a required secure transfer for REST APIs. और आप यहाँ पर रखो तो ये वैसे ही detail ये दे देगा कि क्या क्या इससे option हो रहा है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा. So if I keep this checked, this database will be able to use by an application. Sorry, I have already explained this to you. If you remember, I'll explain it again, but I hope you guys remember that. कि weather वाला application मैंने आप लोगों को weather वाला example दिया था. That weather application बहुत सारे हैं आपके मोबाइल पे. आप if you start searching, तो weather वाले application आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे. N number of application. But weather का information gather करना, it is one of the costliest thing. मतलब आप पुणे डाल दो, पुणे का वेदर आ रहा है, मुंबई का ये कर दो, आप एक पर्टिकुलर एरिया का नाम डाल दो, वहां का भी वेदर सर्च हो रहा है. तो वो जो छोटे छोटे से ऐप बना रखे हैं लोगों ने एंड्रॉइड पे या इस पे iOS पे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू इंस्टॉल दोज इक्विपमेंट्स दुनिया के ऑलमोस्ट हर शहर में जाकर, कि कहीं पर यूएस में, न्यूयॉर्क में, यहाँ पर यूरोप में, इंडिया में, हर शहर का ये करो. दैट इज नॉट पॉसिबल. फॉरगेट एप्स. यहाँ पर जो हम ये देखते हैं, लेट्स लुक फॉर अ वेबसाइट. Okay, yeah. So now it shows 23. It shows this area. यहाँ का बता रहा है. I want to change it. मैं इनकी वेबसाइट पे जाऊंगा यहाँ पर और I can type it. Let's say sitting here, I want to weather Pune, Maharashtra. I'll get this, right? Here it is. So do you think कि ये गूगल ने कहीं से फेच करके दिया है रिजल्ट, राइट? गूगल खुद ये नहीं कर रहा है. आई मीन गूगल हैज दैट कैपेसिटी, गेट दैट कैपेबिलिटी, बट गूगल खुद भी नहीं कर रहा है. व्हेन द व्हील इज ऑलरेडी इन्वेंटेड, व्हाई वुड यू डू दैट अगेन, राइट? सो ये वाली वेबसाइट, नाउ दिस वेबसाइट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम कि इतने सारे इक्विपमेंट हर सिटी में जाके ये करे, जैसे एयर क्वालिटी, इवेंट, ये सारी डिटेल्स हम लोगों को पता हो. सो व्हाट दे डू, व्हाट how it works, or how what they do exactly. The moment I do some search here, they have tie-ups कुछ ऐसी कंपनियों के साथ, मे बी दैट कुड बी नासा, इसरो वगैरह, जो भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, टाटा, या जिन्होंने भी लगाया होगा. आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि कौन ये एग्जैक्टली ये करता है, इक्विपमेंट्स फिल करता है, और मे बी मल्टीपल हो गए. इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई एक कंपनी ने दुनिया भर में लगा कर रखे होंगे. सो दीज गाइज विल टाई अप विद दोस कंपनीज कि आपसे हमको सिर्फ वेदर इंफॉर्मेशन चाहिए, बाकी स्पेक्टेटर्स तक पहुंचाना और वहां पर हमारी वेबसाइट को कैसे एडवर्टाइज करना है, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल कम टू माय वेबसाइट टू चेक वेदर, वो सब मेरा काम है. व्हाट आई नीड फ्रॉम यू, it is just the accurate information, because it is not in my capacity to go ahead and install those devices जहां से मुझको weather की information मिलेगी. So that company says okay fine, but for every inquiry we will charge you 10 पैसा इंडियन रुपीज के हिसाब से. अगर डील होता है, अग्रीमेंट होता है, तो 10 पैसा, और जितना भी वो अग्रीमेंट करते हैं उस हिसाब से. सो दैट इज कॉल्ड एन API.
API का जो है यहाँ पर काम में आता है, where here it is. तो इस तरह का डेटा जो है, इफ आई कीप दिस डेटा अनचेक्ड, तो ये डेटा APIs के लिए काम में नहीं आएगा. So how will it work? If I come here on this website and search for some मुंबई वाला ये या किसी भी तरह का किसी सिटी का वेदर मैं सर्च करता हूँ, सो दिस वेबसाइट विल टेक इनपुट फ्रॉम मी एंड डू एन API कॉल टू दोस कंपनीज जहां से इन्होंने टाई अप कर रखा है, और वहां से वो इन्फॉर्मेशन सब फेच करेंगे एंड दे विल शो इट टू मी हियर. दैट्स ऑल दे विल डू इट. तो इसका बस काम है, तो ये जो पीछे का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उनके वेबसाइट से फेच करना, दैट इज हैपनिंग थ्रू APIs. So this is what it is. Now some company जो APIs में डील करती है and they want to host their database. Let's say कि यही कंपनी जो वेदर वगैरह का सारा इक्विपमेंट उन्होंने लगा रखा, उनका भी तो अपना एक डेटाबेस होगा, उसी डेटाबेस से दूसरों को इंफॉर्मेशन दे रहे. So if they want to host their website, their database here on Azure, and they know कि हमारे पास भी काफी लोग आएंगे जो हमारा डेटा API से एक्सेस करेंगे, then they will keep this checked. और मेरा ऐसा कोई डेटा है जहां पर मैं चाहता ही नहीं हूं कि कोई इसको API से एक्सेस करे, I'll keep this unchecked. Is it clear, guys? Anyone who did not understand? Okay, so I hope everyone has got it. We are repeating this. I have already given the same example. I remember we discussed this. Next is enable blob public access. It's very simple. It is self-explanatory. If I uncheck this, ये publicly access होगा ही नहीं, वो चाहे REST APIs के थ्रू हो चाहे कहीं से भी हो. If I keep this checked and this is unchecked, तो REST APIs तो काम करेगा but publicly नहीं करेगा. I mean within इस network के जो Azure का ये जो network है, मेरा जो ये VNet होगा, इसी के अंदर कोई एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से API कॉल करना चाहता है, that is fine, that will happen because I have checked API. But someone wants to do that over the internet, that is not going to work because I have unchecked this. So again, coming back to the same example, if I know that I have installed इतने सारे हजारों डॉलर स्पेंड करके मैंने वेदर इक्विपमेंट लगाए वहां पर ताकि दूसरे कंपनीज मुझसे फेच करें, and I'm sure that those will be available publicly, वो publicly ही मुझसे information लेना चाहेंगे. And if I'm hosting that sort of data here, so I will have to keep this check. अगर मैं इसको uncheck करता हूँ तो no one will be able to access my data, और उससे कोई मेरी कमाई होगी नहीं. तो इतना सारा जो मैंने लगा रखा है इक्विपमेंट्स वगैरह, आई एम नॉट मेकिंग एनी बिजनेस. क्लियर गाइस? Then enable storage account key access. Now, did you guys install this? I asked you guys to install this Azure Storage Explorer. How many of you installed this? I remember before going on that break, we did that. Yes, guys. Anyone who installed? Anyone who installed? Tell me that. नहीं install किया वो लंबी list हो गया. I'm sure. Anyone who installed, so I can uh, ask them to share the screen. And anyone who installed and they are joining the session from laptop. Because mine is already configured, so you will not understand. I'm looking for someone who has recently installed and didn't do anything. Okay, that's fine. Maybe install it now. कल या next session में जब भी हम लेते हैं, we'll work on this, right? So let me explain this now. Enable storage account key access. तो storage account जो है किस तरह से access किया जाता है? Storage account में understand guys, there are many things. Storage account में table है, queues है, blob है, and then file sharing है. तो here we are talking about the storage account, completely storage account की बात कर रहे हैं. उसके अंदर जाकर भी हमको अलग-अलग चीजें मिलेगी, but this is we are discussing about storage account, whole and sole storage account. So the here question is कि storage account को key access के through ये होना चाहिए यानी अकाउंट की के थ्रू एक्सेस होना चाहिए या नहीं चाहिए. So if I check it, if I keep it unchecked, वो एक्सेस नहीं होगा. And if I sorry, and if I check this, तो की के थ्रू एक्सेस होगा. Now even if I have the key, there are few tools through which I can use this storage accounts, and one of them is
Azure Storage Explorer. So let's say if I have some account here, कोई account है मेरे पास storage का account आपने कोई बनाया, and then you are sharing the key with me that okay you can access my account to, you can delete or do something. The moment you share the access, आपने पूरा सब कुछ उसको complete read access दे दिया है. In fact delete वाला हर तरह का access दे दिया है. Here I am accessing these storage accounts. These are not through keys. यहाँ पर मैंने अपना login access के through लिया है. If you guys see, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने मेरा सब्सक्रिप्शन ये जो है लॉग इन कर रखा है, तो इसमें जितने भी स्टोरेज अकाउंट होंगे बाय डिफॉल्ट मुझको दिखेगा, रिस्पेक्टिव आप लोग मुझको एक्सेस दो या नहीं दो. व्हाई वुड आई सी दिस? लेट्स से दैट इवन इफ यू गाइस क्रिएट वन स्टोरेज अकाउंट, I will see it here directly. Why do you think I'll see that? Here I'm logged in as my Azure account. Here we are not talking about the key. You have not shared the key. आपने मुझको key नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, and still I am able to see uh, all of your storage accounts. Why do you think it is possible? Now say this is Kumail's storage account. He has not given me any access, but I can still see it, and I will be able to delete and do anything. So where this access is inheriting from, can anyone quickly tell me? We have done that. Directory as in Asher? Subscription, right? Right. Someone answered it correctly. I don't know the name. Just came. Okay. Who is this? Just came. Okay, this person answered. That is correct. Fine. So right. So because I have access, let me open this. Tenant, global reader, or no, Ashay, I guess you're getting a bit confused here. Global reader, global administrator, those are Azure Active Directory accesses. वो सिर्फ लिमिटेड होगा Azure Active Directory पे. Let me go there. मैं दोनों चीजों को explain कर देता हूँ. Okay. So Ashar, what you are talking about is here Azure Active Directory. Yes, I am a global admin over there, but that does not mean I will have access on everything. Let me see if you are there as a user. Let me check. So this is Azure Active Directory. I got your confusion. What? So I guess you're not there. No, you're not there. So let's say that Amit is here, right? So here. Now I'm making Amit as a global administrator. So is this your understanding that if I make him global administrator, that then he will have access to all resources on my subscription? If this is your understanding, you are a bit mistaken. Yes, right. So yeah, thoda sa incorrect hai then yahan par aapka understanding. The moment I assigned him here as a, but good you asked. At least we will keep asking even if those topics have been covered. See, I didn't even know कि ऐसा कोई confusion चल भी रहा है किसी में. Okay, so keep asking. So see, the moment I made Amit as a global administrator, that he can manage all aspects of Azure Active Directory and Microsoft services that are using Azure identities. It is very clear and explicitly it is saying that only Azure Active Directory and services that are related to Azure Active Directory and services which we are talking about, those have nothing to do with Azure Active Directory. वो हमारे subscription की services है. So even if Amit is a global admin, that does not mean he will be able to see those storage account and everything. Why am I able to see that storage account? That storage account, the storage account which Kumail has created, it is a part of a resource group. Okay. Let's say that this is a storage account, black one is storage account, red is a resource group. It is a part of a resource group. Okay. And that resource group, it is a part of a subscription. In this subscription, it is a part of a management group. Management group is nothing but just it is just a group of subscriptions.
Okay, so even if you ignore this, even if you ignore the manage, so if I get owner access on subscription, then I can see the storage. Yes, you will. Okay, so even if this management group is not there, अगर इसमें भी है, सब्सक्रिप्शन लेवल पे भी है, तब भी आप लोगों का काम हो जाएगा. So why am I able to see it? Because I have owner access on here subscription level, and we discussed this in first second वाले section में कि how it inherits. If I have owner access on subscription, so by default I will have owner access on all resource groups, not only on this one. जितने भी resource group होते हैं, यहाँ पर अगर है, यहाँ पर अगर है, जितने भी रिसोर्स ग्रुप पे होंगे, मैं सब पे ओनर बन जाऊंगा बाय डिफॉल्ट. एंड बिकॉज आई एम ओनर ऑन दिस रिसोर्स ग्रुप, आई विल बी ओनर ऑन ऑल रिसोर्सेज व्हिच आर there on that particular resource group. Is it clear, guys? Anyone who did not understand? Ashar, is it clear to you? Okay. So coming back to this one, that is the reason I am able to see this. But not everyone will have access, right? आप सबको थोड़ी ना access दोगे subscription group पे. Let's say now Kumail has created one storage group and he wants to give access to Juhi, right? But Kumail himself doesn't have access कि उसको पूरा subscription पे access दे दे जहाँ से she should be able to see it. So now what is the other option? Then there option comes, there is an option of key access जहाँ पर you can share a key, and using that key the other person will be able to access your storage account. So if you want that to be enabled, you keep this checked. अगर आप की से चाहते ही नहीं हो, so you keep it unchecked. Okay. Version, this one I have already, guys, this is about to finish. The moment it finishes, we'll start without any break using the same link. Okay. TLS version, I did explain it to you. इसको आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक चीज याद रख लो. They might ask you कि आपके infrastructure में कौन सा TLS version use होता है. So you tell them 1.2. कितने हैं यहाँ पर 1, 1.1, 1.2. इसमें डिफरेंसेस क्या है, व्हाट इज इट, व्हाई डू वी यूज इट, इन सब की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको. नो वन विल आस्क. इफ यू वांट, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पढ़ना है, क्लिक ऑन लर्न मोर, डू इट. इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं पूछेंगे. दे माइट आस्क यू करंट वर्जन कौन सा है. ठीक है. परमिटेड स्कोप फ्रॉम कॉपी ऑपरेशन, this is a new feature. Whatever it shows in preview, it is a new feature, so we are not discussing that as of now. Okay. Let me stop this, guys, and we'll start using